गुड आफ्टरनून। बीए थर्ड ईयर का आज का तीसरा चैप्टर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम रोशनी डालने से पहले ये देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है 9 मई 1866 को हुआ और मृत्यु जो है तो 19 फरवरी 1915 को हुई। अब चलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की ज़िंदगी और उनकी जो काविशें हैं और उनके जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है कि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील मवाळवादी असलेले महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व म्हणजेच गोपाळ कृष्ण गोखले यांना ओळखले जातात। ते राष्ट्रवादी, उदारमतवादी व धर्मनिरपेक्ष मतांचे विचारवंत होते। यांच्या विचाराने क्रांतिकारक असलेल्या गोखलेंचा मार्ग हा मवाळ होता। मवाळ यानी कि जिसमें किसी किस्म की जहालत नहीं होती, प्रेम भावना होती है और नैतिकता होती है। इसी विचारधारा को रखने वाला जो नेता होता है वो मवाळवादी नेता कहा जाता है। और जहालवादी नेता उसे कहते हैं जिसमें जहालत होती है, जो हमेशा जो है तो हिंसा की बात करता है, लड़ाई की, मारपीट की बात करता है, उसे जहालवादी कहते हैं। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे कि भाई गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा जन्म 9 मई 1866 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोतलुक या गावी एका सामान्य कुटुंबात झाला। त्यांनी आईकडून रामायण व महाभारताचे धडे घेतले। त्यांच्या वयाच्या 13व्या वर्षी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता। घराची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याने त्यांच्या भावाने त्यांचे शिक्षण पूर्ण केले, यानी कि उनके भाई की बदौलत जो है तो उनका एजुकेशन पूरा हुआ है। अब गोपाल कृष्ण गोखले इनका जो प्राथमिक शिक्षण जो है वो कोल्हापुर ज़िले में हुआ। कोल्हापुर जिल्ह्यातील कागल येथे झाले। माध्यमिक शिक्षण कोल्हापूर येथील राजाराम कॉलेज येथे झाले। उच्च शिक्षण पुण्यातील डेक्कन कॉलेज व मुंबईचे एल्फिन्स्टन कॉलेज येथे झाले। अब इनका जो व्यवसाय है इस व्यवसाय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पुढील शिक्षण त्यांना घेता आले नाही। त्यांनी पुणे येथील न्यू इंग्लिश स्कूल येथे शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली। या शाळेतील राष्ट्रीय वातावरणाचा परिणाम त्यांच्यावर झाला। त्यांचे इंग्रजी व गणित हे त्यांचे आवडीचे विषय होते। इंग्लिश और मैथ ये जो है तो उनके चहीते जो है तो सब्जेक्ट जाने जाते हैं। अब डेक्कन एजुकेशन संस्था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गोखले यांच्या पुढाकाराचे 24 ऑक्टोबर 1884 रोजी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी डेक्कन एज्युकेशन संस्था स्थापन करण्यात आली। गोखले स्वतः शिक्षक तसेच संस्थाचालक सभासद होते। या संस्थेचे संस्थापक टिळक व आगरकर यांचा उद्देश भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हा होता, परंतु त्यांच्या वैचारिक मतभेद झाले। आगरकरांनी सामाजिक सुधारणेला व टिळकांनी राजकीय स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले। अब इनका जो राजकीय प्रवास है, राजकीय प्रवास के बारे में हम अगर देखें तो यूँ समझा जाता है कि भाई यहाँ पर न्यायमूर्ती रानडे यांच्या प्रेरणेतून गोखले यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। त्यांचा सहभाग हा कृतिशील होता। 1905 मध्ये त्यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली। उसके बाद जो है तो ब्रिटिश काल में जो है तो विधिमंडल के सदस्य भी जो है तो बनाए गए। नामदार गोखले यानी कि नामदार बोले तो जो चुनकर आता है उसे नामदार कहा जाता है, और जो चुन के आता मतलब जो मिनिस्ट्री में आता है उसे नामदार कहते हैं, और जो चुनकर आता है उसे आमदार कहते हैं। आमदार और नामदार ऐसा, और खासदार और आमदार इन दोनों को भी अगर जो मिनिस्ट्री मिलती है उसे नामदार कहा जाता है। तो नामदार गोखले 1899 मध्ये मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात निवडून आले। त्यावेळी त्यांनी ब्रिटिश शासनावर कठोर टीका केली। 1902 मध्ये व्हाईसरायच्या
इम्पेरियल काउन्सिलपदी त्यांची निवड झाली. त्यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नामदार गोखले यांनी दिलेली 12 भाषणे खूप गाजली, ज्यात भारताच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, उद्योग, यात निर्यात, लष्करी खर्च इत्यादी अनेक विषयावर त्यांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. त्यानंतर भारत सेवक समाजाची स्थापना ही गोपाल कृष्ण गोखले यांनी केलेली आहे. ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि भाई भारत सेवक समाजाची स्थापना डैश डैश यांनी केली, तो गोपाल कृष्ण गोखले उसका सही जवाब होगा. ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या विविध मागण्यासाठी नामदार गोखलेंनी भारत सेवक समाज या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून राष्ट्रप्रेम वाढीस लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या संस्थेची उद्दिष्टे साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य व देशबांधवांची उन्नती हे होते. 1905 मध्ये नामदार गोखले वाराणसी येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. नामदार गोखलेंचे कार्य महत्त्वपूर्ण असून त्यांची सनदशीर चळवळीवर पकड निर्माण केली होती. वंगभंग आंदोलनाने सनदशीर चळवळीस मोठा धक्का बसला. इस तरह से जो है तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो अपनी ज़िंदगी में जो काम किए, उस काम की सराहना जितने भी की जाए कम है. इसके आगे का हम बाकी दूसरे पीरियड में हम देखेंगे. थैंक यू.